तमाम साथियों को या अली मदद and thank you for joining us this morning. आज हम फरमान मुबारक बैतुल ख्याल मुलाकात अहमदाबाद इंडिया February 23rd 2018 we will continue with this फरमान नूर मौलाना शाह करीम हुसैनी हाजिर इमाम या मौला मेहरबान मदद फरमा या मौला मेहरबान मदद फरमा या मौला मेहरबान मदद फरमा या मौला तौफीक ताहीद हिम्मत व यारी मौला तौफीक ताहीद हिम्मत व यारी मौला या मौला मेहरबान मदद फरमा मौला हम गरीबों पर रहम कर मौला या मौला अपने नूर से हम गरीबों की हिदायत फरमा मौला अपने नूर की रोशनी में हमें इस सिरातुल मुस्तकीम पर आगे बढ़ा मौला या मौला मेहरबान मदद कर मौला मदद फरमा मौला या मौला हमारे करीब आ जा मौला हमारे और भी करीब आ जा मौला ताकि तेरी शफकत के साये में मौला हम रहकर ये काम कर सके नूर मौलाना शाह करीम हुसैनी हाजिर इमाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद. We were reading inshallah each one of you once in your lifetime will be touched by that special light, and I give you my special blessing for success. Kanavadan, Kanavadan, Kanavadan. Special light. What makes this light a special light? What does it mean, a special light? A nur, which is very unique, very special, and customized for you. As each individual experience may be very special and unique. In the Quran, we find this sort of language in the prayers of our prophets. For example, Hazrat Sulaiman prays that Ya Allah, give me a kingdom which no one ever have or will have. Very unique and special to me, unlike any other kingdom. Now, if you think about that, every kingdom is very, very similar to each other. Think about any of the countries or any of the kings of this physical world, or any of the imams and prophets. They all have a very similar journey. They have a place, people, disciples, believers, not believers, and they preach and they have trials and turbulence and they have a happiness
but the kingdomship as a whole is very similar to each other. Some may have a smaller place, bigger place, more subject than the other, but a unique or very special. So here the special and unique is due to their personal experience. And the kingdomship of Suleiman was unique and special to him because he was asking for a great kingdom in his personal world. And due to that, that was special and unique. Just like that, when we do receive this light, it would be special, customized, and very unique to us. Mullah further says, यहाँ पर कुछ उर्दू में समझाता चलो कि जब मुल्ला ने कहा कि ये एक खास नूर आपके लिए होगा, मुल्ला फरमाते मेरी दुआ है कि हर एक को उसकी जिंदगी में एक बहुत ही खास नूर नसीब हो। तो ये खास नूर से क्या मुराद है, नाचीज उसको समझाने की कोशिश कर रहा था। ये खास इस सेंस में है कि ये आपके लिए खास होगा, ये आपके लिए एक बहुत ही इनफरादी एक्सपीरियंस तजर्बा होगा, यानी कि ऐसा तजर्बा कि जो आपके लिए होगा और ऐसा नहीं कि ये हर एक के लिए हो। हर एक को नूर नसीब होता है लेकिन अलग अलग तरीके से। शायद इसलिए अगर किसी को नूर की नवाजिश होती है और वो दूसरों को बयान करने की कोशिश करते हैं तो वो समझ नहीं पाते हैं क्योंकि ये एक्सपीरियंस उनका नहीं था, ये बहुत ही इनफरादी था। यहाँ पर स्पेशल नूर से ये मुराद है क्योंकि वो नूर उनके आलम शख्सी में उनके लिए खास था। जिस तरह से नाचीज ने मिसाल दी हजरत सुलेमान की, आपने दुआ की कि या अल्लाह मुझे तू एक ऐसी बादशाही इनायत कर जो कभी भी किसी को ना मिली हो, कभी भी किसी के पास ना हो, ना तो पहले ना बाद में, क्योंकि वो अपने आलम शख्सी की बादशाही तलब कर रहे थे जो उसके लिए खास थी। तो देखें हम इन चीजों को जोड़कर किसी बात को समझ सकते हैं, वरना ये नूर का बयान इतना आसान नहीं है क्योंकि ये बहुत ही इनफरादी है। So let's go further. I repeat in this Farman, if inshallah you are successful, keep that as a personal gift. Don't try to share it. It cannot be shared. It is yours individually. And if you speak about it with others, they will not necessarily understand. Just like explained above, when this gift, inam, blessing, नवाजिश किसी को होती है तो वो शेयर ना करे क्योंकि वो बहुत ही इंडिविजुअल है, इनफरादी है, और जरूरी नहीं है कि हम तमाम के साथ शेयर करें क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे इसको। Therefore is not necessary and no need to share with others as they will not be able to understand.
there comes the word individually, very unique to us. So don't try to articulate what cannot be articulate in language in a satisfactory manner. आप उसको बयान ना करें क्योंकि ये बयान नहीं किया जा सकता है, हमारे पास वो जबान नहीं है. We do not have that language, nor we have that vocabulary. Our prophets, our dais, our peers, when they explained their ruhaniyat, it was because Allah had given them a language to do so. They were given the amr to do so. In Surah Rahman at the beginning, Allah talks about that. You see, we can find these references in the Quran. That I taught them Quran, and then I gave them life, and then I gave them the language, the tongue to speak. You see, if we are those fortunate one who would be taught and given this nur and given the vocabulary and given the amr, then he will give us their life and their language, vocabulary, tongue to speak. We will have the amr of Ilahi to talk about, and we will be able to use the language that no one would know that you are talking about your own experience, because you will be speaking in such a manner that they will not know, but they will understand that you are explaining some experience. They will not know that you are sharing your experience. That is the language Imam is speaking of here, and that is the language and the tongue Allah speaks in the Surah Rahman at the beginning. This is a matter of soul. It is not a matter of voice or articulation. मौला ने फरमाया कि आपके पास वो जबान नहीं होगी कि जिससे आप ये काम बयान कर सकेंगे, क्योंकि ये रूह का मामला है, बोलने का और समझाने का मामला नहीं है, बोलने का और बयान करने का मामला नहीं है. This is a matter of the soul, not the matter of using your language, your tongue, and explaining. So I said to my spiritual children, set aside worldly matters, sit in peace, sit in search. And if inshallah you are successful, all of you individually keep this as your individual special blessing. जब आप इसमें कामयाब हो जाएं, इंशाल्लाह अगर आप इमाम के फरमान के मुताबिक ये काम करते हैं और उसमें कामयाब हो जाते हैं, तो ये आपके लिए इनफिरादी होगा. If you are successful, remember, this is for you, very special and very individual. So keep it to yourself. Do not describe, do not try to describe. Because those who have not had this touch of light, they will not be able to understand. Because those who have not had this touch of light will not necessarily understand. क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसी किसी चीज का तजर्बा नहीं किया है, और ये आपके लिए इनफरादी और बहुत ही खास है. आप समझ गए कि किस तरह से
ये नूर जो है वो बहुत ही मखसूस होता है, हर एक के लिए अलग अलग, यानी कि उसका तजर्बा जो है वो अलग अलग है. At the end, if you have any question regarding this, you can ask. आप समझ गए कि ये तजर्बा कितना खास है कि अगर आप किसी को बयान करते भी है तो वो नहीं समझ पाएंगे, तो इससे बेहतर है कि हम उसको बयान ना करें. मौला आगे फरमाते हैं, इंशाल्लाह, if you are successful, that light will accompany you through your life. It will be a source of strength. It will be a source of happiness. It will be a source of confidence. It will be a source of courage. It will protect you. It will help you, and it will bring you peace. I give to each one of you again my best special blessings for success. Khanavadan, Khanavadan, Khanavadan. Here, Mola speak of few things that you will receive from this light. Number one, you will have this for rest of your life. It's not that you have it today and you don't have it tomorrow. Once you have it, and inshallah, if you continue to practice, this light will get bigger and better and stronger, and it will remain with you for the rest of your life. If you do not continue to practice, then this light will be with you, but as it was received as a part of a spark and not a full-fledged fire. If you understand what I'm telling you. And it will bring you happiness, strength, confidence, and courage. What does it mean? Because of this, it will change your life. You will be more confident in your religion and in your personal life. You will be more courageous to do things to help others, where before you would doubt yourself, now you will not. You will be confident. And with the courage, you will be able to do that. This part, it will protect you. It will protect you from what? Worldly difficulties will remain. Worldly difficulties will always be part of your life. But you will have a courage to face it. And spiritual difficulties and the whisper of the shaitan, it will protect you from that. Because now you have the shield of the nur, the light over you. And it will protect you from the shaitan and his whisper. It will give you the courage and confidence to understand your tariqah, your religion. It will help you and it will bring you peace. यहाँ पर थोड़ा सा उर्दू में समझाता चलूं. पहले फरमान को थोड़ा सा उर्दू में समझ लेते हैं. मौला फरमाते हैं कि अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो याद रखें कि ये नूर आपकी पूरी जिंदगी में आपके साथ रहेगा. अगर आप इस नूर का तजर्बा करते हैं और कंटिन्यू इबादत के अंदर कंटिन्यूएशन रखते हैं, बाकायदगी रखते हैं, तो ये नूर आस्ते आस्ते ज्यादा से ज्यादा बड़ा और मजबूत होता चले जाएगा.
जिसकी वजह से आपको एक तरफ रूहानी खुशी और बहुत ही ज्यादा हिम्मत मिलेंगी। क्या करने की हिम्मत मिलेंगी? जो भी आप करते हैं, चाहे वो इबादत हो, मजहब को समझने की कोशिश हो, या दुनिया का कोई काम हो, उसके अंदर आपको हिम्मत मिलेंगी। और ये नूर आपकी हिफाजत करेगा। किस तरह से हिफाजत करेगा? दुनिया की जो चीजें हैं वो तो होने ही वाली है। ऐसा नहीं है कि आपको नूर मिल गया तो अभी दुनिया की कोई तकलीफ आप पर नहीं आएंगी, कोई बीमारी नहीं आएंगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपकी जो समझ और मजहब का जो अकीदा है, ईमान है, उसकी हिफाजत होगी। और शैतान और उसके वसवसे से आपकी बचत होगी, आपकी हिफाजत होगी। चूंकि ये नूर आप पर छा गया होगा, अब शैतान के वसवसे आपको नहीं घेर सकेंगे और ये आपकी मदद करेगा और आपके अंदर एक सुकून पैदा करेगा और एक अजीब किस्म का इत्मीनान होगा आपके अंदर। मुल्ला फरमाते हैं आगे, आई गिव ईच वन ऑफ यू अगेन माई बेस्ट स्पेशल ब्लेसिंग फॉर सक्सेस, खाना वदान, खाना वदान, खाना वदान। My beloved spiritual children, sit in peace, look for that light, sit in humility, in search, without greed, and keep in mind that that light comes to you, but you cannot take it. याद रखें, आराम से बैठें, आजीजी से बैठें और वो नूर जो इमाम ने आपको इसमें आजम के साथ इनायत किया है, उसको हासिल करने की कोशिश करें। ये आपको दिया जाएगा, ना कि आप उसको ले लेंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने हाथ लंबा किया और उसको ले लिया। जब आप अपना इसमें आजम पूरा करेंगे तो ये नूर खुद ब खुद खुलकर आपके सामने आ जाएगा। इज नॉट that you can reach, extend your hand and reach out and take it, but it would be given to you. When you successfully finish your Ismi Azam, the Noor which is already in you within your Ismi Azam will reveal to you. Inshallah. You are accustomed to action and reaction in your life. This does not work in this matter. दुनिया में हम कहते हैं कि मैं ये करूंगा तो ये होगा। इबादत में ये नहीं है। बस आप आराम से बैठे, इंशाल्लाह ये नूर आपको इनाम के तौर पर दिया जाएगा। In the worldly matter, we do things in expectation that something will be returned. I wanted to buy this, I'll give you the money, I will take this. That's not the case when it comes to Ibadat, Isme Azam, and Noor. You sit in peace, in humility, and inshallah it would be given to you. This does not work in this matter. ये दुनिया की तरह काम नहीं करता है, ये इनाम के तौर पर काम करता है, ना कि बार्टर सिस्टम के तरीके से। This does not work like in worldly matter, a barter system where you give something and you get something. In this case, you just sit with the humility and inshallah, it will be gifted to you. You will be honored with it, inshallah. You have to sit in peace, in search, in happiness, set aside worldly matter and seek that special light. And I give you my best loving blessings again. Khanavadan, Khanavadan, Khanavadan. Here Mola repeats,
how important it is that you sit in peace, in humility, in happiness. I would like to emphasize on happiness part. Ibadat is given, ibadat is done with your free will, with happiness, not as a burden, not as forceful action. It must be with your free will and your happiness. And I can tell you, and you know what I'm talking about. સવારના મને ઇબાદતમાં જાવું છે, મને જલ્દી સુઈ જાવું છે. હું સવારના ઉઠી નહીં શકવાની, મને જલ્દી સુઈ જાવું છે. હું નથી કરી શકતી આ, મને સવારના ઇબાદતમાં જાવું છે. ના ના ના, હું બહુ થાકી જવાની, મને ઇબાદત કરવી છે. That sounds like burden. Don't talk about it. Do it with peace and happiness. When you wake up in the morning, wake up because you want to, because you happily want to do it, not as a burden, because then you are defeating the purpose. And Imam constantly and continuously throughout this book repeats these steps. He's telling you exactly, if you want it to be successful, follow the steps Imam has given in this book. Take a piece of paper, start write down all the steps Imam has given you. Imam is showing you, Imam is guiding you, Imam is holding your hand like a child. He's telling you how you can make success in ibadat. How can you be successful in ibadat? He has given you a list of things to do. What are they? Sit in peace. Seek the light, which he has already given it to you. Wake up and sit in ibadat with happiness. You sit in happiness, you get up in happiness. Sit in humility. Fifth, set aside worldly matter. Six, don't seek this with the greed. Seek this with hope. Seek this light not with the greed, but with hope. Make a list of this thing and check. Have I done this? Have I done this? Have I done this? When your checklist is complete, you will see something amazing happening to you. Because Imam is giving you a roadmap, a guidebook, almost like 7 steps to success. 7 steps to success. Make a list and see what or which one step we are not doing. For example, we rush in the morning for ibadat. What you are not doing? You are not sitting in peace. You wake up as a burden. What are you not doing? You are not doing your ibadat with happiness. You think, if I do this,
this will, I will get that. What two parts you are not doing? One, you are sitting there with the greed. Second, you are thinking of this as a barter system. You are not putting your worldly matter to a side. If you're thinking this is a light like a light bulb, what are you doing? You are thinking of this special light as a physical light. You see, that's how you're going to check your list. Am I understanding this? And remember, if you don't understand one or two or three, this Garib and Nachis is here to help you. याद रखें कि इमाम हमें बच्चे की तरह एक गाइडेंस दे रहा है, हमें समझा रहा है कि आपको क्या चीजें करनी है। आपको ये करना है, 1 2 3 4 5 6 7 ये करना है। आपको एक लिस्ट बनानी है और देखना है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, अगर नहीं किया तो क्या कमी पेशी रह गई। जैसे मौला ने कहा कि आप आराम से इबादत में बैठे हैं। अगर आप 4 बजे उठकर जमात खाने भागते हैं तो वो आराम तो खत्म हो गया जो कहा था कि आराम से बैठे। आप तो हराहुरी में जाकर बैठे। वो पीस जो सुकून के साथ बैठने के लिए फरमाया गया था वो तो खत्म हो गया, क्योंकि आप तो भागा भागी कर रहे हैं। जबकि आपको कितने बजे उठना था? 3 बजे उठना था। आराम से तस्वीर निकालते निकालते, हाथ मुंह धोकर तैयार होकर, आराम से, भागा भागी में नहीं। देखा, पहली शर्त क्या थी? आराम से। फिर दूसरी शर्त क्या थी? आजीजी के साथ, आजी के साथ, गुरूर के साथ नहीं, शोबाजी के साथ नहीं, बातें करते करते जमात खाने जाते जाते नहीं, आराम से। तीसरी शर्त क्या थी? खुशी के साथ। नाचीज ने मिसाल दी अभी इंग्लिश के अंदर कि मेरे को जल्दी उठ के जाना है। Oh, I cannot do this. I need to wake up for ibadat. Oh, no, 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 I'll get tired. I have to wake up for ibadat. अभी ये मिसाल दी ना? नहीं, ये तरीका नहीं है। इबादत की बात ही ना करें किसी के साथ। और जब सुबह को उठे तो खुशी खुशी उठे, चाहे आप 9 बजे सो गए हो, 10 बजे सो गए हो, 12 बजे सो गए हो, आप उठेंगे अपनी मर्जी से और खुशी के साथ, बर्डन के साथ नहीं, जबरदस्ती नहीं। क्योंकि ये शर्त रखी है मौला ने। फिर उसको आप दुनिया के मयार पर नहीं तोलेंगे, दिखावे के लिए इबादत नहीं करेंगे, बातें करते करते नहीं जाएंगे जमात खाने, जल्दी उठकर तस्बीह करते करते, आराम से, धीरज रखते हुए, दुनिया के तौर पर उसको नहीं तोलेंगे, दुनिया की रोशनी, लाइट बल्ब की रोशनी के तरीके से उसको नहीं सोचेंगे। फिर आपके अंदर उम्मीद होनी चाहिए, लालच नहीं। उम्मीद के साथ इस नूर की तलाश करेंगे, लालच के साथ नहीं। यानी कि इसलिए नहीं कि अगर मुझे नूर मिल गया तो मेरा यह फायदा होने वाला है, नहीं, उम्मीद के साथ कि अगर मुझे ये नूर मिल गया तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आखिरत सुधर जाएंगी। दुनिया के लालच के लिए नहीं कि मुझे नूर मिल गया तो मेरी जिंदगी आसान हो जाएंगी, ये लालच हो गई। मुझे उम्मीद है कि नूर मिल गया तो मेरी आखिरत संवर जाएंगी। That's the hope, not the greed. How and what is the greed?
that if I receive this light, my life will be easier. Great. I hope I will receive and touched by this light, and my end will be better. Hope, not greed. And that's how you seek this light. Make a list. I give you blessing for success that is very important for success. Listen to this. Have you ever seen this line of Farman? I give you blessing for success that is very important. If you remember last week class, if you are not here, I will encourage you to listen to last week class. It is the blessing of the Imam that will make you successful. As Imam gives you the bowl, it is his blessing, mercy, khanavadan in that bowl that will help you open that bowl and the nur will come out of it. The nur will appear from it. The nur will touch from it. That is very important for success. Nachiz and Garib does not tell you something which is not part of the Farman. Every single word is the understanding of this Farman. The blessings, the mercy of the Imam. Otherwise, anyone can go to the Quran and open the Quran and find one of the bowl, find one of the Isme Azam. Why do we need Imam? Because of his blessing, his Khanavadan, his wish and will for us. We need that to be successful. It is the Imam who blesses us with the bowl Isme Azam along with his blessing and his nur. You cannot take this from the Quran on your own. It must be given to you, blessed you by the Imam Zaman. And that is very important. ये ऐसी चीज नहीं है कि जो आप बस ले लें कहीं से, पढ़ लें कहीं से, कुरान के अंदर से निकाल के पढ़ना शुरू कर दिया. नहीं, इसमें आजम इसमें जात यानी कि इमाम जमान के साथ है और ये इमाम जमान से ही हासिल किया जा सकता है और ये इमाम जमान की दो आशीष ही है कि जिससे हमें कामयाबी मिलने वाली है और मौला फरमाते हैं ये बहुत ही अशद जरूरी है. खानावदान खानावदान खानावदान. Let's read this last paragraph and then we will finish. Keep this as a link with your Imam. The Isme Azam is a link, a phone number between you and the Imam. You call Imam by using this phone, this link. We call Isme Azam. Call on him. He is giving you their phone number, that ball, that link. मौला फरमाता है कि ये एक कनेक्शन है मेरे और मेरे मोमिन के बीच में, आपके और आपके इमाम के बीच में. ऐसा है जैसे इमाम ने आपको अपना जाती फोन नंबर दे दिया. आपको जब भी मर्जी आए आप फोन को उठाएं और मौला को फोन लगाएं. ये आपके पास एक प्राइवेट फोन नंबर है मौला का. जब भी चाहे आप मौला को कॉल करें, पुकारे मौला को अपने इसमें आजम के जरिए से. ये आपके और आपके इमाम के दरमियान में एक पर्सनल लिंक है. Whenever you wish, call on him through this Isme Azam
It's a link between you and your Imam. You don't not need to talk about it. Don't talk about your ball. You do not need to share. Don't share your Isme Azam. Whatever light you are able to attract, are you listening? What Mullah is saying? Whatever light you are able to attract, because it's not one, it's a many kind and very unique to you. Whatever nur you are able to attract, keep this as an individual link to the Imam of the time. That will be the individual link between you and your Mullah. A private phone number between you and your Mullah. Keep it to yourself. क्या मुल्ला ने फरमाया कि ये एक ऐसा जरिया होगा कि जिससे आप इमाम को पुकार सकेंगे। जब ये नूर आपको नसीब होगा, जिस तरह से भी नसीब होगा, क्योंकि वो आपके ऊपर है, वो आपका इनफिरादी कनेक्शन होगा, डायरेक्ट फोन कॉल होगा आप और आपके इमाम के दरमियान में। दिस इज सो यूनिक फरमान, so beautifully explained by the Imam Zaman to us poor and Garib Mu'mineen. Because sometimes we don't understand that part. So Imam said, don't share. Keep it to yourself. Don't talk about it. It's yours, between you and your Imam. So be careful with this. It is yours. But there is no reason to treat this as though this was a matter that concerns every murid around the world, because it is only for those who want to enter into Bethel Khayal. Don't share because it doesn't concern anyone else. Don't talk about it because it is you and your Imam, it's between you and Imam. And it is not that this is for everyone. Even Ismaili Tariqa, this is not for everyone. It is only for those who themselves wish, have committed to the Baitul Khayal. If they have come to the Imam, then it is between them and the Imam. It is not between you and them. So don't do it. No need it. ये आपके और आपके इमाम के दरमियान में है, और याद रखें कि ऐसा भी नहीं है कि तमाम इस्माइलियों के लिए है, ये सिर्फ उसके लिए है जो ये कहता हुआ जाता है कि मुझे कुछ अपनी रूह के लिए करना है। ये उसके और इमाम के दरमियान में है, और वो लोगों के लिए है जो बैतुल ख्याल में अपनी मर्जी से इंटर हो जाते हैं। तमाम इस्माइलियों के लिए भी नहीं है ये। So at the end, Mullah says, I give you my blessings for success. Khana Vadan, Khana Vadan, Khana Vadan. Please recite the Holy Salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. आखिर में मौला अपनी दुआ शीश के साथ इस फरमान को यहाँ पर तमाम करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का ये फरमान पिछले हफ्ते के फरमान के साथ जोड़कर अगर आप 1, 2, 4 मरतबा इसको सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, लिख लेते हैं, बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आप कामयाब हो जाएं। If you take today's explanation and today's farman, last week explanation and the farman, which is the same farman, if you listen to it 1 time, 2 times, 4 times, make a good list and be mindful of it. The hope and prayer is that soon, very soon,
it will bring some result, happiness to you, because now you have understood, you know how to do it. Now you have a checklist, how to do it checklist. And if you don't understand, ask. Let me stop here. We can open the floor for questioning. Subhanallah, sir, Subhanallah. Indeed, sir, it is a very unique Farman, sir. So I want to ask you from this Farman, sir, when sir, Imam says, whatever light you be able to attract, is this understanding correct that Imam is saying here the light of touch, light of smell, light for eyes? Is that what Imam is saying here? Right, because light can touch you in different manner, and it can be of a 5 kind. On top of that, even the light that you see, it can be like a spark, can be like a bigger spark, can be like a fire, can be like a light, bright light, can be low, dim light. So many different ways this light can touch you. So Imam said, whichever light, when it is given to you, because so unique and customized for you, keep it to yourself. Subhanallah, yes. Subhanallah, Subhanallah. Thank you, sir. Friends, please share your questions in the chat, or you can use the hand raise feature, or you can unmute your device to ask the question. So, sir, we have the question in the chat. Friends asking, when you say your Ism Azam is complete, what does that mean? Is it the amount? And is this different for everyone? Also, can we accelerate the completion with other actions in addition to the Ism Azam? Right. Very good question. Whoever is asking, bravo, good job. बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने. Every isme azam has a known quantity, meaning it must be completed. And I'm just giving you an example. Don't hold me to it. Just giving you an example. For example, that you must say your Isme Azam 40,000 times. Just an example. Don't write it down. Don't hold me to it. Let's say this Isme Azam requires 40,000 time recitation. But it's not the recitation like I'm going to count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Not that counting. When you call on your Isme Azam correctly and with the force, it gets counted. Meaning it takes you one step up, one step up, one step up. When you take all of those quantity and count and steps, at the end, this Isme Azam opens. And from that, through the blessing of the Imam, the Noor becomes visible to you. Or you will have an experience of that Noor. And that is the known quantity for the Isme Azam. You remember last week I had explained how to call on your Isme Azam. And if you do that, inshallah, hope is, and Imam's prayers are with you, that soon rather than later you will be successful. The second question was, what else can we do to boost this Isme Azam? Number one, attitude, ikhlaq. Our ikhlaq, attitude, plays a great role in success or not successful in ibadat. अपने इखलाक को दुरुस्त करें,
سب سے پہلے اپنے اخلاق کو درست کریں. Become humble, become a friendly person, don't backbite, don't gossip, don't hurt people, be mindful, change your attitude. That is number one. Number two, zikr of the Isme Azam all day long. Don't forget your dua. Be careful in your dasan, in your khidmat. All of those are the extraordinary sugar that you put on top of this cake to make it more sweet. आप समझ रहे हैं ना? आपके इखलाक, आपकी खिदमत, आपकी आदत, आपकी मदद, किसी की गिला गिबत ना करना, किसी के पीछे से बात नहीं करना, किसी को बुरा भला नहीं कहना, लोगों की अच्छाई के लिए कुछ करना, किसी की मदद करना, मारू 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 नहीं. This part helps you, it makes you lighter. An example इसकी क्या है कि आप जितनी शुगर डालेंगे ना इतनी ज्यादा चाय मीठी होगी. आपके जितने इखलाक अच्छे होंगे इतनी इबादत में फायदा होगा, क्योंकि आपने वो तमाम कंडीशन को पूरा कर लिया है जो इबादत करने के लिए थी, और उसमें इखलाक नंबर 1 सबसे आगे है. हमारे दाइयों ने और हमारे आरिफों ने ये हमें समझाया है कि कोई आदमी शरीयत यानी कि दुआ भी नहीं पढ़ सकता है. अगर आपके इखलाक अच्छे नहीं है तो आपकी दुआ भी रायगा हो जाती है, तो फिर इबादत किस तरह से काम आएंगी. इखलाक इज नंबर 1. Our dais and peace and our arifin have said, without your good attribution, even your shariat, your dua is wasted because your attitudes are not good. Ikhlaq is number 1 requirement to be successful. Ji. सुभान सर. सर फ्रेंड रिक्वेस्ट करे कि इसी को थोड़ा उर्दू में अगर एक्सप्लेन करें. जी, यहाँ पर ये अर्ज की जा रही थी कि इबादत में कामयाबी की जो नंबर 1 चाबी है, क्योंकि पूछा गया कि हम कितनी मर्तबा ये इसमें आजम पढ़े और किस तरह से पढ़े और क्या क्या कर सकते हैं इबादत में कामयाब होने के लिए. किस तरह से इसमें आजम पढ़ना है वो आपको समझा दिया गया है. क्या करना है उसकी लिस्ट बना दी गई है कि आप ये करें. अब एक चीज बच गई कि हम और क्या करें. उसके लिए जरूरी है कि हम अपने इखलाक को दुरुस्त करें, हमारे बोलने चलने के तरीकों को दुरुस्त करें. हम किसी के लिए क्या करते हैं, हमारे लिए तो हम सब कुछ करते हैं, सारा दिन ही करते रहते हैं. हमारी खिदमत, हमारी जबान, हमारी आंखें, हमारे कान, हम दूसरों के लिए किस तरह से उसको वक्फ करते हैं. क्या हम किसी की बात को सुनते हैं, किसी को अच्छी मशवरा देते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी क्या करते हैं हम. ये जरूरी है कि हम अपने इखलाक को दुरुस्त करें. अगर आपके इखलाक दुरुस्त नहीं होंगे तो यहाँ इबादत की तो बात दूर की है, यहाँ तक कि शरीयत भी यानी कि दुआ भी आपकी कबूल नहीं होती है. और ये हमारे दाइयों और आरिफों ने हमें बहुत मर्तबा समझाया है कि इखलाक नंबर 1 स्टेप है, सीढ़ी है रूहानियत के अंदर कामयाबी की. इखलाक को दुरुस्त करें, अपने अंदर आजीजी पैदा करें, अपनी जबान को दुरुस्त करें, बेकार की बातें ना करें, दूसरों के लिए सोचें. अपने लिए तो सब कुछ सोचता है आदमी, दूसरों के लिए क्या करते हैं आप.
یہ ساری چیزیں ضروری ہے. جی. Subhanallah, sir. Friends, please unmute your device if you have any question, or you can use the hand raise feature to ask question. پیاری مدد سر. علی مدد. سر یہ جو آپ نے امید اور لالچ کی جو بات کی تھی نا، تو آپ نے کہا تھا کہ میری مطلب امید یہ ہونی چاہیے کہ آخرت سنور جائے، تو آخرت سنور جانے سے کیا مراد ہے؟ کہ ہمارا جو آخرت کا سفر ہے وہ چھوٹے میں چھوٹا ہو جائے، اور آخرت میں جب ہم یہاں سے گزر کے جائیں تو ہمیں یہ نہ ہو کہ میرے پیچھے سے میرے رشتہ دار دعا کریں گے تو مجھے مولا کے دیدار نصیب ہو گئے. اگر ہم اس دنیا میں اس امید سے عبادت کرتے ہیں کہ جب ہم یہاں سے مر کے جائیں تو امام کے فرمان کے مطابق گنہگاروں کے نہ گزریں اور سیدھا امام کی بہشت میں اصل میں واصل ہو جائیں، اور دوسرے کو ہمارے لیے دعا نہ کرنی پڑے. ہماری امید یہ ہونی چاہیے کہ ہماری آخرت سنور جائے، یعنی کہ ہمارا سفر جو ہے وہ لمبا نہ ہو، بس یہاں سے ہم جائیں اور وہاں پر امام کے ساتھ ایک ہو جائیں. یہ امید ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ہماری لالچ یہ ہے کہ ہماری دنیا سنور جائیں گی تو یاد رکھے کہ آپ کے آخرت کا سفر بہت ہی لمبا ہوگا، کیونکہ آپ نے وہ پیسے وہ کمائی یہاں خرچ کر لی، وہاں کے لیے رکھنی ہے ہم کو. جی. تھینک یو. Sir, اسی کو انگلش میں بھی اگر رس میں. Right. So what does it mean? That have a hope, not greed. Greed, if I do ibadat, my life will be easier. I will not get sick. I will keep my money, my job, etc., etc. That is a greed. What is the hope? Hope is that my end will be better. My journey of the soul at the end would be shorter. I would not need others to pray for me. Hope is I will take enough with me on my own that when I die, instantly Imam will accept me in his nur, and my journey will be short. That is the hope. Keep that saving, the good deeds, for the end, in the hope of a better end, not in the greed of utilizing for this world. If you use that saving in this world, you will have nothing but an empty hand. When you leave, then you will be dependent upon your family and friends in Jamaat to pray for you, and that journey could be painful, and the journey can be long, long, long journey. You do not want that. Ji. Ji sir, subhanallah sir. Sir, we don't have any question in the chat. Friends, please unmute your device. If you have any questions. یا علی مدد سر. یا علی مدد. سب سے پہلے بہت بہت شکریہ، کرم مہربانی جو آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ اپنے علمی گروپ میں مجھے شامل کیا، اور بس مولا کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں میں. اور آپ نے جو ویڈیوز وغیرہ بھیجے تھے مجھے لنک، اس میں سے تھوڑے میں نے سنے. بہت بہت نوازش، بہت مزہ آیا. ایک سوال اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اسم اعظم کا جو اس لیکچر میں بتایا گیا ہے کہ منٹ میں 100 سے 120 مرتبہ اس کا ریٹرن ہونا چاہیے بہت فاسٹ، تو دن کے ٹائم پہ تو صحیح ہے، لیکن بیت الخیال میں آپ اگر میں بیٹھتا ہوں
तो इमाम का तो ऐसा फरमान है कि ज़बान नहीं हिलनी चाहिए, लेकिन अगर आप अपनी ज़बान नहीं हिलाते हो तो उतना फास्ट अटैन नहीं होता है। तो क्या मैं शुरुआती दौर में ज़बान को हिला सकता हूँ बैतुल ख्याल के बंदगी में भी? प्लीज जरा उस जी पे अगर क्लैरिफाई कर दे। और दूसरा, सॉरी आपको काटने के लिए, दूसरा ये कि आपने अभी अभी बताया है कि लास्ट वीडियो में आपने ये बताया था कि इसमें आजम कैसे बोलना है, तो ये वही उसी तरह है या फिर कुछ दूसरा है? और दूसरा है तो मैं इसको कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि आज ये मेरा पहला ही सेशन है। थैंक यू वेरी मच सर। you're welcome. So just quickly, there is actually two small clips कि जहां पर किस तरह से बैठना है और किस तरह से इसका विर्स करना है, उसका एक छोटा सा क्लिप है जो आपके इबादत के फोल्डर के अंदर है, जो नाचीज ने शेयर किया है। ओके, नाउ just like our physical life, example of our physical life, when we are children, how do we drink milk? When we grow up, how do we drink milk? And what is the need of the milk when we are 40, 50-year old? You would say that the need at the child of 1 day, 1 month, 1 year is much greater, and the quantity of the milk is much greater early than later on. आपने देखा कि जब हम बच्चे होते हैं, जब हम जवान होते हैं और जब हम बूढ़े हो जाते हैं, कितना दूध और किस तरह से हम दूध पीते हैं जब हम बच्चे होते हैं, उसकी क्वांटिटी और स्पीड क्या होती है। आपने देखा है बच्चों को दूध पीते हुए, वो 5 मिनट में पूरी बॉटल पी लेता है और हर 4 घंटे में एक बॉटल पीता है, हर 4 घंटे में। समटाइम 8 times a day वो एक बॉटल दूध की पीता है। क्वांटिटी एंड स्पीड is there. That's the example of our physical life. Just like that, Isme Azam at the beginning requires speed and quantity. Speed and quantity at the beginning. And you are right, practice needs to be done in the daytime. So your tongue will help you at 4 o'clock. As you progress in your ibadat, meaning just like a child, when he grows up, the quantity and speed of the milk goes down. As you grow in your ibadat, your speed and your quantity will not matter that much. It will go down. Initially with the tongue. After that, no use of a tongue. So I was in Houston, I believe 2 weeks ago now, and I was showing to them those 3 ways of reciting Ismi Azam. With your permission, I will show you here again. At the beginning, let's say your Ismi Azam is Yali, Yali, Yali. So at the beginning, let's say 40 days in the beginning, until you yourself will feel you don't need to do that no more. Okay? You be the judge. I cannot be your judge. Yali, 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 yali. You should be able to hear yourself inside of you, and the speed needs to be that 120 per minute. Speed and the sound, you should be able to hear yourself inside. Why? Why you need to do that? So the whisper, the thoughts of the worldly matter will not come in between. You have blocked it by your speed and your quantity and the sound. You are blocking all other sound outside. So there is a practice, a matter why you do it. And it Ali Allah Madad Farma, Mafi. It is important, it is necessary for us to do that. So there was
First stage. Quantity and sound. You should be able to hear your Ismi Azam yourself. And you just saw me. Yali, 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 yali. Second. Now your tongue is still used, but sound will go down. Yali, 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 yali. Speed will remain, sound will go down. What you are saying, now I'm confident in my ibadat that other whisper will not bother me. If other whisper comes, other thought comes, what are you going to do? You're going to increase your isam and you're going to increase your sound. But if it doesn't, your speed will remain, your sound will go down. Yali, 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 yali. Second stage. Third stage. Your speed and your sound both will disappear. So how are you going to do it on third stage? See, there is no sound and there is no speed. Your tongue will not be moving. That's what Imam was talking about. So there are stages. But so when Imam say, I want you to grow up and be a strong man, he's also telling you to do what you need to do. Drink your milk in a quantity in such a way that you can become strong. Then you grow up and be strong. If some parent says to the child, well, Imam says you need to grow up and be strong. Come on, get up. A child will not be able to do that, right? So that's what the practice is. Thank you for a good question, G. बहुत बहुत शुक्रिया सर, गुड एक्सप्लेनेशन, बहुत बहुत शुक्रिया. Alhamdulillah. Thank you so much. Subhanallah, sir. Okay. Shukar Mala. Any other friends have a question? आप सब जो भी कहा जा रहा है आप उर्दू में अगर मैं बोल रहा हूं तो आप इंग्लिश में समझ रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहा हूं तो आप उर्दू में समझ रहे हैं. If I'm saying too much in Urdu, you ask me in English. If I'm saying in English, you ask me in Urdu. It's okay. I can, re-explain if it needs to be. G. अगर कोई बात गुजराती में समझवी છે ને નથી સમજમાં આવી રહી તો બી પૂછી લેજો તાકે આ એવું છે કે અગર આપણે સમજી ગયા તો આપણને બહુ ફાયદો થવાનો છે ઇન્શાઅલ્લાહ. મોલાની દુઆ આપણા સાથે છે. All right. If there are no more questions, then we can stop here. Jesus, don't have any questions. Thank you everyone for joining. Ya Ali Madad, Ya Ali Madad. थैंक यू सर, शुक्रिया शुक्रिया. Ya Ali Madad, sir.